तो फ्यूल को सिलेंडर में डाल के कंप्रेस करते हैं, तो इग्नाइटर से उसमें लगाते हैं। हाँ, तो that will again form a mini explosion, you will say. Yes, yes. When the oxygen and air coming in contact with the fuel, the compression or ignition will be there, and due to that what will happen, आपका air और जो फ्यूल आता है दोनों का आपस में कंप्रेशन से उसका इग्निशन करा रहे हैं या डायरेक्टली स्पार्क से इग्निशन करा रहे हैं, तो क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, इसके से पिस्टन मूव करता है, रिवॉल्व करता है। हाँ, पिस्टन मूव क्यों करता है? प्रेशर एनर्जी की वजह से। हाँ, you will see that when these two components are coming and heat is there, in that case there will be a combustion, means there will be a burning of that fuel. Burning नहीं होगा, combustion होगा। burning तो different हो जाता है। There will be a large increase in the volume of gases, sudden, है ना? तो गैस का वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसका मतलब it will create the more pressure, और प्रेशर के चलते पिस्टन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। So the combustion is different. और burning जो बात कर रहे हैं, burning जब आप घर में एक पेपर जलाओ, है ना, जैसे जलाओगे ना माचिस से, तो उसमें क्या हो रहा है, heat is moving, heat चल रहा है ना, एक कोने से एक एंड से दूसरे एंड तक हीट जाएगा ना, but that goes through particles to particle, है ना, so that is slow process. Combustion is a little bit higher, है ना, speed, or है ना, and then there will be a deflagration which will be near to the speed of the sound, है ना, up to 1000 meter per second. And if the reaction happens, आपने कभी केमिस्ट्री लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट किया? तो देखो, दो कंपोनेंट्स आप मिक्स करते ही तुरंत आग लग जाता है ना, ये तो है ना, तो क्या होता है, that comes, you see that how fast reaction has happened, है ना, so that reaction, and due to the reaction the release of energy is there, that will come under the detonation. It means here if there is a reaction, the reaction rate will be almost 4000 or 3000, it means more than 2000, generally we say 2000 meter per second and above, so that will come under the detonation. So 3 words है ना, burning हो गया, 4 words हो गया, देखो, एक तो burning हुआ, then combustion हुआ, then deflagration हुआ, then the detonation is coming. So different. जैसे अगर आप देखते हैं कि क्रैकर्स फोड़ते हैं दिवाली पे, है ना, यस सर, क्रैकर्स में तो बोलते हैं ना बारूद है ना, यस सर, लेकिन that is very low, that is having the very low chemicals, so energy जो रिलीज होगी वो बहुत कम होगी, and those है ना can be considered as explosive, but not the explosive part. Those will have the capability to create more sound, air or pressure, but those chemical will have very less energy to break the rock, because for breaking, है ना, एक सिंपल सा है, आप प्रेशराइज्ड, एक तो हाई प्रेशर गैस, जैसे कहीं कार में हवा भरवाने जाते हो, प्रेशर कंप्रेस्ड एयर फिल करता है ना, यस सर, कैन इट, अगर आप उस एयर को बाहर में छोड़ दोगे तो एक साउंड करेगा, है ना, एंड सॉइल है उसको रिमूव करेगा, बट कैन इट क्रिएट्स क्रैक्स इनसाइड द रॉक? नो, बिकॉज इट इज हैविंग द गैसियस एनर्जी, इट इज नॉट हैविंग द शॉक एनर्जी, है ना, तो हमें क्या होता है कि दोनों एनर्जी चाहिए, शॉक एनर्जी भी और गैस एनर्जी भी। जैसे कई बार होता है कि आप जो ना इस पे देखेंगे, आप एक टेबल पे या जहाँ बैठे हैं उसके ऊपर मारेंगे तो क्या होगा, थोड़े से कहीं भी पत्थर पे मारते हो तो क्या होता है, कैसे? इफ यू हैव हैमर, हैमर से जो है ना अगर टेबल पे मारोगे तो क्या होगा, टूट जाएगी टेबल, शॉक लगेगा,
शॉक वाइब्रेशन लगेगा होगा। तो यानी कि आपने ढंग से नहीं लगाया तो क्या होगा, उसका पहिया टूट यानी एक लैग टूट जाएगा, है ना। यस सर। नहीं तो क्या होगा, क्रैक डेवलप होंगे टेबल के ऊपर में, है ना। यस सर। नाउ और यू सी दैट दैट एनर्जी विल बी, कौन सा एनर्जी बोलोगे उसको, शॉक एनर्जी, शॉक दिया ना। तो एक्सप्लोजिव जब रिलीज कर एक्सप्लोजिव जब इनिशिएट करते हैं तो यू विल सी देयर विल बी टू काइंड ऑफ एनर्जी, one will be shock energy and another one will be the gaseous energy, and these two energy we have to utilize in such a way that it gives you us the maximum utilization of energy in form of fragmenting the rock mass. Finally हमें rock mass को तोड़ना है, and for that purpose the explosives will be there. And सर हाँ एक बोलो। शॉक और इम्पैक्ट में डिफरेंस होता है कुछ? नहीं दोनों सेम ही है ना, इम्पैक्ट है शॉक है, that will be there, है ना। इम्पैक्ट तो क्या हो गया कि आप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर में यहाँ जैसे आप टेबल पे मारते हैं ना, दैट इज देयर इम्पैक्ट, तो वही हो गया। लेकिन ड्यू टू दैट इम्पैक्ट द वेव्स विल ट्रेवल इनसाइड द रॉक मास, और द टेबल के अंदर में क्या होगा, वेव ट्रेवल करेगी। यस सर। एंड व्हाट दे विल डू, द वेव विल कैरी द एनर्जी, है ना। यस सर। and those waves will create the cracks inside the either rock और टेबल जहां भी आपने इम्पैक्ट दिया है ना। तो पहले एक तरह से इम्पैक्ट दिया है ना, या शॉक भी बोल दोगे, लेकिन शॉक जो है ना, शॉक से शॉक वेव्स क्रिएट होगी, और इम्पैक्ट करोगे तो भी उससे शॉक वेव्स क्रिएट होगी। तो इनिशियल स्टेज में जो आपने सिर्फ आपने क्या कर दिया, एक बार जब मारा है तो वो तो एनर्जी आपने ट्रांसमिट कर दी एज इन द फॉर्म ऑफ इम्पैक्ट और शॉक, है ना। Then there will be shock waves that will travel inside that material to create the cracks or generate the cracks, Yes. है ना। So as a fraction of seconds these will be same, but later on the work will be done by the another kind of, है ना, elements क्या बोलोगे या different mechanism, so that will be shock waves, और impact को impact waves बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही almost, है ना, for a fraction of seconds. So explosive क्या है, what is explosive? It is a chemical compounds, और कुछ नहीं है ना। But chemical compounds में तो बहुत सारे आते हैं, but it should have such property that when a ignition or impact is given, then suddenly it converts into the high gas, है ना, or it releases high or pressurized gases at high temperature and pressure. You can say it will create, when the explosive will be ignited, it will create high pressure at and releases high temperature. So when the mixture is detonated, it rapidly releases high temperature, approximately 4500 degree centigrade. इतना टेम्परेचर क्रिएट करेगा और जनरेट करेगा, एंड प्रेशर विल बी ऑलमोस्ट 2.5 gigapascal, है ना, and it can reach up to the 4 gigapascal, but it is given 2.5 gigapascal, which rapidly expands and causes sufficient force to overcome the confining pressure, है ना। So here what will happen when you are putting the explosive, यहाँ पे explosive डालना है आपने, when this hole will be filled with the explosive, when it will be detonated, detonate करना है, so it will create the large amount of pressure will be generated, and this will, the pressure waves or compressional wave will be moving, and then there is a different mechanism. Due to that, it will break the rock mass. So in the explosive, when we fire the explosive, mainly there will be, you see that the temperature that will increase, and there will be shock waves and the gas energy. But these gas energy and the shock energy or shock waves, which we call the shock energy also, these will be utilized for breaking the rock. Shock energy. So it is a mixture of chemical which on ignition gives large amount of gases at high temperature and pressure. बस और कुछ नहीं है. So the recent developments in explosive industry and the advancement in the evaluating systems have made the blasting engineering a
subject of more scientific in nature, which is used for more of an art. Now it is possible to design and execute a perfect blast without any unwanted overbreak. So here you will see that when we do the blasting, definitely we are having very less control over the explosive energy utilization. मेन दिक्कत तो ये है ना, अगर आप मैं बोलूँगी कि आपको घर का जो है ना एक कमरे की छत उड़ानी है और है ना हटानी है, ठीक है, और उसके अंदर में आपको गैस सिलेंडर से काम करना है. So now can you control that this will work in this chamber only? No, sir. It's very difficult, है ना. So similarly here also. तो इसलिए जहाँ भी जैसे कोई blasting करते हैं, तो what we have to do, we have to take lot of precautions when we do the blasting. Okay, and definitely we have to control the explosive energy by putting the required quantity of explosives, by designing the blast round. So that will be done. So basics क्या है explosive पता चला है ना. So before going this, I just want to show you the videos that how actually we can. एक तो देखो, एक सिंपल सा ये है, ये एनिमेशन दिया है ब्लास्टिंग प्रोसीजर्स का. विजिबल हो रहा है ना? Yes, sir. Okay. So this is surface mine, where you will see that, or surface excavations, where you see that the drilling is going on. Once the drilling will be done a particular pattern, up to a required hole depth. So this drilling is going on. Drilling करना है पहले. So now the drilling is done. Explosive will be charged. This explosive charging, it means पहले initiating system डाला हमने, फिर ये explosive आ रहा है. And then upper part will be filled with the drill cuttings or the aggregate material, and then many holes will be drilled, and now these holes are connected in the sequence using the initiating systems, and then these will be fired. Okay, so similarly when the explosive detonation is happening, in that case how the actually the shock waves are creating the cracks. So ये देखो cracks, जब एक hole में explosive डाल के initiate कर रहे हैं, तो the cracks propagations will be there. So there will be radial cracks developed during detonation process. Detonation से क्या होगा? When we do the detonation, in the detonation you will see the reaction will be there, and during the reaction process it will create the shocks and the gas energy. So shock भी create करेगा, and shock will create the cracks, and the gas energy will expand the cracks, as well as it will throw the material. Similarly for underground mines के अंदर या आपका tunnel के case में, this is the face, and the face will be drilled as per the design. Later on design discuss करेंगे the holes, and in the holes it is explosive will be inserted, and then explosive will be connected, and then the sequence will be made and fired. Primers are made of packaged emulsions or a product called boosters combined with a detonator placed in them. The explosion exerts very high pressures way above the rock strength. This creates a zone of crushed rock immediately around the hole. The explosion also generates a shock wave which starts the cracking process. The explosive gases generated expand extremely quickly, forcing cracks apart, breaking the rock and pushing it into the nearest hole. Long holes may use multiple primers. They are typically that was for the underground, and this is for the surface mine. Predefined intervals as determined by the drill and blast engineer. Enough primers are used to ensure that the long explosive column is initiated. Even dozens of explosives should be tested as
and authorized persons. So you got this one. Now you see that for the other in surface excavations, I just want to show this one. ये देखो, ये यहाँ पे मुझे ब्लास्ट करना है एक हिल के अंदर में. So you see, when I did the drilling, charged and fired, then this way it will be there, and you will see that you have to control many parameters when we do the blasting. So this is the, you see, आपका देखो ये पूरा हुआ, उसके बाद में ये फायर हुआ, है ना. So this way, or you can see another. If I want to break this, so when we design the blast round, it should be in such a way that it should not create any nuisance. It means it should not create any fly off or the vibration, much vibrations, or the aero pressure or the misfire. So for excavation purpose, we have to do. No. So here also you see this part will be broken. Now once it is broken, you can easily load and transfer. So you have seen the videos of these one. देख लिया ना, videos देखा? Yes, sir. Okay. So now you see that how effective the explosives are, and explosives can be fired either in open or it can be fired in closed. तो ओपन स्पेस में भी आप फायर कर सकते हो, क्लोज स्पेस में भी फायर कर सकते हो. और अच्छा एक बात बताओ, है ना, इफ यू वांट टू यूज दिस एक्सप्लोजिव, अगर मेरा यहाँ पे एक्सप्लोजिव रखा, मैंने यहाँ पे एक्सप्लोजिव रख के फायर किया, है ना, तो कैन यू फायर दिस एक्सप्लोजिव डायरेक्टली विद द मैच स्टिक? माचिस से जला सकते हो? नो सर. नहीं, माचिस से जलाओगे तो आप भी जो है ना नहीं बचोगे, ब्लास्ट हो जाएंगे. हाँ, because the reaction is very fast. The reaction will be, as I'm telling, it may be the 4,000 meter per second. That fast is, reaction will be there. There will be no time to run away from this place. So accordingly, it should be fired properly. So now coming to the classification of explosives. Explosives क्या है? It's a chemical compound which on ignition or impact हो गया. सर एक्सप्लोजिव, हाँ बोलो सर इन एक्सप्लोजिव से ये डिसाइडेड रहता है कि कितना हॉरिजॉन्टली ब्लास्ट होगा, कितना वर्टिकली होगा. हाँ, वो डिजाइन करेंगे अभी. सर प्री डिसाइडेड. हाँ, because that way we can control. We knows the explosive, है ना, एक्सप्लोजिव से एनर्जी कितना रिलीज होगा, एनर्जी, है ना, that we knows. And then now you see that by characterizing the rock mass, you knows that how much energy will require to break this, that you knows. So accordingly, how much explosive to be charged, that will be charged, so for that purpose you have to do the design. Okay, sir. Okay, so design you will learn, but that is there. So now coming to the explosives. So as I told, there will be explosive क्या है? It's a chemical compound which on ignition convert the chemical compounds in form of high pressurized gases and shocks. So it's explosive which on ignition gives large amount of gases at high temperature and pressure. And as I told, temperature can reach up to the 4,500 degrees centigrade, and pressure it can go up to the 2.5 gigapascal. So it is huge, है? It's not simple, it's a huge, na? Yes, sir. So anything. So can we use explosive in the combustion chamber? आपका जो बाइक चल रहा है या कार चल रहा है उसमें अगर डालेंगे ऐसा केमिकल तो क्या होगा? No, sir. ब्लास्ट हो जाएगा. एक ही बार में जो है खत्म हो जाएगा पूरा, ना? So we cannot. So
Now coming to the explosives. So explosives are classified in different forms. First will be low explosive. Another one will be, if I come, it's a high explosive. Another, you will see there will be you can say primary explosive. Another one will be the blasting agents. Another one will be the special type of explosion, special type or special category explosion. So major classification is this. So in the slides में भी आप ऐसे ही देंगे. अब low explosive का एक example दे देता हूँ मैं. So it is being used from last many years, and that name is, if I say, gunpowder. Gunpowder है ना? Gunpowder नाम सुना है? Yes sir. आपका जो गन है ना, जो राइफल होता था उसमें यही एक्सप्लोजिव यूज होता था, गन पाउडर, है ना? So it's a low explosive. Yes, and what sir. is the chemical composition? It will have the potassium nitrate, it will have the sulfur, it will have the charcoal. And this having the very low explosive, low energy. When we are saying low explosive, it means low energy, है ना? So this can also be used अगर इसका, and again by mixing the other components, this can use for the crackers में आप इसको use कर सकते हैं, है ना? By adding or by diluting this explosive, ना? Directly use करेंगे तो it is harmful, but by diluting it means adding more, है ना, other carbonaceous material and reducing the strength. So generally अगर आप देखेंगे low explosive, and still we are using this low explosive in the form of gunpowder जो यूज कर रहे हैं. और इसका बर्निंग स्पीड में बताता हूँ. gunpowder से हम एक इनिशिएटिंग सिस्टम बनाते हैं, that will be safety fuse, याद रखना, है ना? सेफ्टी फ्यूज होता है, और इस एक तार जैसा, वायर जैसा देखा है ना, एक अगर मैं बोलेंगे कि ट्यूब है ना, और इसके अंदर में आपने ये सेफ्टी फ्यूज ना गन पाउडर भर दिया है. इनसाइड दिस इज गन पाउडर, और बाहर में क्या होता है कि जो ये कोटिंग होता है, किसका कोटिंग होगा? जैसे ये क्या बोलेंगे अपन, जूट होता है ना, जूट का रेशा है ना, स्ट्रिंग बनता है, बस उस तरह का ये बना होता है, और अंदर में गन पाउडर रहता है. एंड गन पाउडर क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल. अब इसका कॉम्बिनेशन देखोगे आप, 75% ये है, दिस विल बी 15% एंड दिस विल बी 10%, बट देयर यहाँ पे चेंज भी हो सकता है. इसको मुझे देखना तो थोड़ा सा भूल जाते हैं ना. तो 75 चारकोल 15% और सल्फर 10%. सल्फर 10% है, दिस इज 10% एंड ये 15%. तो एक प्रोडक्ट एक है ना, जो कोई कंपनी बना रही है, उसका कंपोजिशन ये है. तो अगर आप गन पाउडर का कंपोजिशन देखेंगे तो इट विल हैव द पोटेशियम नाइट्रेट, इट विल हैव द सल्फर, इट विल हैव द चारकोल. कार्बन है, पता चल गया ना? इन तीनों को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? गन पाउडर. और ये लो एक्सप्लोजिव कैटेगरी का है ना? तो एक कम से कम इसको याद रखना आपको, गन पाउडर है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, और उससे सेफ्टी फ्यूज बनता है, और सेफ्टी फ्यूज को हम जनरली यूज करते हैं टनल में या माइंस में, है ना? एंड दिस विल बी यूज फॉर इग्निशन पर्पस, है ना? अब जैसे मैं बोल रहा था, अगर आपने देखा होगा, एक बड़ा क्रैकर्स लाते हैं, एक बॉम्ब लेके आए आप, इसमें एक्सप्लोजिव रहता है ना, नाम सुना है ना? कई बार होता है, बच्चे बोलते हैं सूतली बॉम्ब. यस सर. उसमें क्या आग सीधा लगा देते हैं इसके ऊपर, या देयर विल बी स्ट्रिंग होती है, है ना? यस सर. बस, तो सिमिलरली द सेम कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड इफ आई हैव द एक्सप्लोजिव. और जैसा अभी बताया था ना कि एक्सप्लोजिव का कार्ट्रिज है और इसको इग्नाइट करता है, तो व्हाट आई विल डू, आई कैन कनेक्ट इट बाय द सेफ्टी फ्यूज. और सेफ्टी फ्यूज को आप जो ये इसको कैसे जला रहे हैं, माचिस से जला देते हैं ना, you can ignite with the matches. Now what happens, the safety fuse is low explosive, it is coming under the
you can say burning category. ये burning category में आएगा. Burning, it means there is no reaction and there is no combustion. There will be burning of from particle to particle. है ना, जैसे सूतली या कुछ रेयन या धागा कुछ जलाते हो ना, एक जगह आग लगा हुआ है तो धीरे धीरे क्या होगा, दिस हीट विल ट्रांसफर. सो दिस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइक इट बर्न्स, और इसका जो है ना बर्निंग स्पीड, जो बर्निंग हो रहा है इसका स्पीड जो है, बर्निंग स्पीड दैट विल बी 90 to 120 सेकेंड्स पर मीटर. अब ये याद रखना है, जबकि स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है ना. यस सर. ये लेकिन ये 1 मीटर जलने में इसको लगता है 90 to 120 सेकेंड्स एज पर द कंपोजिशन. रेंज है ना कंपोजिशन के हिसाब से, है ना. तो अगर अब आपको ये जलाना है, यू नोज दैट इफ आई फायर फ्रॉम दिस प्लेस एंड आई हैव टू रन अवे 300 मीटर, 300 मीटर दूर भागना मुझे, जहाँ पे मेरे एक चैम्बर है वहां पे मैं खड़ा हो जाऊंगा, आई विल बी सेफ. सो हाउ एट व्हाट स्पीड आई कैन रन अवे, है ना. 300 मीटर भागने में मुझे कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, है ना. अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लोजिव के साथ में उतना लंबाई का आप बांधोगे, है ना. अगर जैसे आप बोल दिए कि नहीं मैं 2 मिनट्स में भाग के चले जाऊं, 2 मिनट्स इज माई, है ना, तो 2 मिनट में तो नहीं भाग पाओगे. 100 मीटर भागने के लिए भी ऑलमोस्ट कितना चाहिए, 10 सेकेंड्स का है ना. अभी रिकॉर्ड कितना है, 11.2. तो उतना स्पीड से तो भागोगे नहीं. और ये भी जहाँ पे कीचड़ होगा, स्टोन्स होंगे, अनइवन सरफेस होगा, है ना. So you will see if you can dive 2 meter, 2 meter, it means you will have the almost, है ना, 3 minutes. 3 मिनट्स में तो भाग जाओगे 300 मीटर. So accordingly the length of the safety fuse will be tied with the explosive, है ना. कि यहाँ से मैंने इग्नाइट किया और चले जाएंगे. आपने काला पत्थर वगैरह मूवी देखी है अमिताभ बच्चन की? देखिए सर. देखिए, है ना. तो ब्लास्टिंग करता है ना. यस सर. हाँ, तो अमिताभ बच्चन ने काम भी किया था इधर रामगढ़ में, ठीक है, क्वारीज में. तो उसका बस वैसे ही करता हो, ये सेफ्टी फ्यूज को आराम से जो है क्या बोलते हैं, स्मोकिंग करता हुआ जाता है, यहाँ जलाता है ना, फिर आराम से निकलता है और पीछे फायर होता है. कई बार मूवीज में बताते हैं ना. यस सर. बस वैसे ही है. तो यहाँ भी जो है, here as a tunnel engineer or as a blasting engineer, regularly you will fire huge quantity of explosive. So this is coming under the safety fuse, which will be a gun made of gunpowder and coming under the low category of explosive and having the burning speed of this much. ठीक है, ये याद रखना है ना. Because as a tunnel engineer, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग तो आपको कंप्लीटली ढंग से आना चाहिए, ठीक ना. चलो ठीक है सर. आई थिंक फॉर टुडे इट इज गुड एनफ. यस सर. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में फिर दूसरे एक्सप्लोजिव्स की बात करेंगे. सर जो गन पाउडर है सर, आपने बताया 3 एलिमेंट, जिसको हम किसी भी रेशियो में मिला दें तो गन पाउडर बन जाएगा. जनरली पोटेशियम नाइट्रेट जो है ना 75% रखते हैं, है ना. बाद में सल्फर एंड चारकोल है, इसको मिक्स करते हैं, है ना. तो आप बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बिकॉज इट इज लो एक्सप्लोजिव. जो क्रैकर्स बनाते हैं ना, यस सर, वो अगर इसमें कंपोजिशन चेंज कर देंगे तो एनर्जी रिलीज कंपोनेंट विल चेंज. आपने पोटेशियम नाइट्रेट कम कर दीजिए तो क्या होगा, उसका एनर्जी कंपोनेंट्स कम होगा, है ना. तो एनर्जी कंपोनेंट्स कम करने के लिए वेरिएशंस कर सकते हैं. बट एज ए स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है, स्पेशली बिकॉज दिस विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग द सेफ्टी फ्यूज, और सेफ्टी फ्यूज के लिए हमें ये कंपोजिशन मेंटेन रखना है. ओके सर. ओके, तो सब लोग आए हैं कि कौन नहीं आया है? ये नहीं है, राजेंद्र नहीं है. यस सर. ओके, चलो ठीक है तो फिर, है ना. ओके, यस सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू.